हियर इज दिस मैक्रोकॉस्म, क्योंकि ग्रेट वेव सबसे ऊपर का मैक्रोकॉस्म की चीज लगती है मेरे को। एंड हियर द थिंग कि ये नीचे से स्टार्ट हो रहा माइक्रोकॉस्म से रिलेट करते हुए, एंड ये ऊपर स्टार्ट हो रहा मैक्रोकॉस्म से रिलेट करते हुए। तो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग बाय दिस थिंग कि आर्केटाइप एक तरीके से दिस काइंड ऑफ वे में काम कर रहे हैं, दिस एंड दिस, and here it is the microcosm, and here it is the macrocosm, and here is this great wave, and here are these situated, and हमारा जो कोरिलेटिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है वो करता है इनके बीच में, एंड इट इज बीच में कौन सा चीज आया, ये आया एक्सपीरियंस। वाह, एक्सपीरियंस ही आ रहा है। हम्म। तो जो बीच में जो चीज है, क्योंकि हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म के बीच में एग्जिस्ट करते हैं देखा जाए तो हमारी एग्जिस्टेंस देखा जाए तो इन तीन के बीच में चलती है, सिग्निफिकेटर, एक्सपीरियंस और कैटलिस्ट। तो हम्म। ऊपर के दो हो गए, ये नीचे के दो हो गए। और क्योंकि एक्सपीरियंस अब तो लोअर, ये है, लोअर साइकिल है, एक्सपीरियंस लोअर लेसर साइकिल है। लेसर हम्म। साइकिल है टिल एक्सपीरियंस। उसके बाद अपर थ्री कम्स इन द ग्रेटर साइकिल। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली exactly। अब इसके अंदर कोरिलेशन अगर हम निकालने, मैंने इनको बंच कर दिया है क्योंकि इट इज लाइक वेग एब्स्ट्रैक्ट बंचिंग, क्योंकि माइक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म के बीच में हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसे भी हो सकती है कि वी आर जस्ट लिविंग फॉर द एक्सपीरियंस। येलो रे, ग्रीन रे। ग्रीन रे देखा जाए तो काफी सारे न्यू एज स्पिरिचुअल के अंदर इट कैरीज मच हायर वेटेज देन एवरी एनीथिंग एल्स, एंड स्पेसिफिकली इन दिस मल्टीकल्चरल एरा जहाँ पे हर्ट सेंटर्ड थिंग्स आर एवरीथिंग, जिसकी वजह से आज के टाइम पे डीआई मूवमेंट लिटरली बुलशिट हो रखा है। तो that is causing much distortion also. So experience, how do you think that, क्योंकि actual में matrix is not just a matrix, it is a matrix is like क्या बन रहा है ये, yeah. So Illusion of the mind. every archetype is like a structure or like an component. Let's see, this is a component, say matrix Okay. for a vague example. This is the matrix, and similarly uh, there would be this potentiator and everything. So if I take this matrix and if I zoom into it, uh, it is kind of creating, it is responsible for the microcosm. For example, this consciousness matrix is known as the consciousness. Matrix is consciousness. Yeah, conscious mind. Yeah. Hmm. Matrix known as the consciousness, like into the name archetype, male energy, consciousness, from which all comes, unmoving yet is a potentiator of all mind activity. It is a consciousness, and consciousness is the microcosm of all universe, as Raj also told us. Hmm. एंड दैट इज द माइक्रोकॉस्म का बेस लाइन देखा जाए तो। हाँ, तो मैट्रिक्स माइक्रोकॉस्म में आता है, एंड Hmm. ग्रेट वे एकदम माइक्रोकॉस्म में आता है। इट इज लाइक दो स्ट्रक्चर्स लाइक, जो कि एक तरीके से प्लानिंग होती है, अपनी प्राइमोर्डियल प्लानिंग होती है देखा जाए तो। एंड इट इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इन दिस कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल अपना वॉलेटरी सोल यहाँ पे ही है, एंड Hmm. हमारे वॉलेटरी सोल को इम्प्लांट करा जाता है इस इनकारनेटिव रियलिटी के अंदर। एंड Hmm. विद इन दिस इनकारनेटिव रियलिटी, यहाँ पे देर इज दिस होल सेट ऑफ
डेस्टिनी काइंड ऑफ थिंग, कि मतलब चीजें हैपन इन विल हैपन इन सर्ट इन दिस पैटर्न. ड्रामा. हाँ. ड्रामा. एंड in this drama, uh, there are, kind of predefined key moments या फिर key catalyst. या. key catalyst. So इसकी जो मैपिंग है, ये मेरे को लगता है ये ग्रेट वे का कंपोनेंट है, नॉट ओनली द मैपिंग बट ऑल्सो ऑल प्रीवियस मैप्स. Yeah. Yeah, I remember having this discussion. Not just this incarnation, even the previous incarnations. हाँ. मैपिंग ऑफ इनकारनेशंस एंड द रिपोजिटोरी ऑफ प्रीवियस मैपिंग्स. तो ये आकाशिक रिकॉर्ड का जो कंपोनेंट है, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर जो भी मतलब देखा जाए तो आकाशिक रिकॉर्ड तो बहुत एक वेग कंपोनेंट हो गया, वो सिर्फ एक लाइब्रेरी के फॉर्म में फंक्शन करता है थ्योरेटिकली. लेकिन तो ग्रेट वे. स्टोरेज. हाँ. स्टोरेज डेटा है वो. हाँ. बट ग्रेट वे इज लाइक मच मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. इट इज लाइक थिंग ऑफ a macrocosmic thing. It is like क्योंकि होता क्या है कि अभी हम जिस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ यही एक ट्रू रियलिटी है. एंड यही टाइमलाइन है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मरूंगा एंड इफ आई विल रीइंकारनेट अगेन, तो ये प्रीकॉन्सेप्शन है कि मैं या तो पास्ट में जा सकता हूँ अपनी टाइमलाइन के अंदर, एंड जो पास्ट में जो चीजें होंगी वो सेम जिस तरीके से हुई थी हमारी लाइफ में वही होंगी, या तो मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ जिसके अंदर चीजें विल हैपन इन अ सर्टेन वे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने जो अभी तक जिया है वो बेसिस होगा पास्ट का. बट इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे इन्फिनिट अरे ऑफ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज होती हैं. इट इज लाइक the basic foundation will be the same. For example, अगर मैं अर्थ का सोल हूँ, and so that the basic foundation would be the same कि अर्थ is a planet and everything, and some key moments would be the same कि एक evolutionary pattern की वजह से हम होमो सेपियंस से मतलब बंदर से हम होमो सेपियंस बन गए and everything. बट जो ट्रेजेक्टरी होगी उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मतलब द होल प्लैनेट इज इन मोनार्की स्टिल, एंड ये भी हो सकता है कि हर जगह डेमोक्रेसी चल रही है एंड एनीथिंग. ये भी हो सकता है कि कोई फ्री बीमारी, एनर्जी. हाँ, कि गरीबी नाम की कोई चीज नहीं है. तो राइट. इन्फिनिट टाइमलाइन. पॉसिबिलिटी, एग्जैक्टली टाइमलाइंस. एंड how our mind body spirit complex totality chooses any incarnation. So एक तरीके से वो है कि बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, और क्या होता है कि अब कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो मतलब उसको कोई दोस्त मिलते हैं, एंड वो उसको किस्मत से मिलते हैं क्योंकि उनके भी पेरेंट्स ने वही दोस्त वही स्कूल चुना होता है भेजने के लिए उनको. तो इट इज द सेम थिंग. अवर माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी चोज दिस रियलिटी जिसके अंदर हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड विद इन दिस रियलिटी बाकी सब, जैसे कि तुम्हारा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी और जो भी लोग यहाँ पे हैं, इन सबके माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी ने ये रियलिटी चुनी एक्सपीरियंस करने के लिए रियलिटी की. Yeah. वी ऑल आर And हियर. everything is available already. It's like, when you're playing a game, all levels are available to you. It हम्म. depends on which level you're playing from. And you have infinite characters and, lives, like एंड reincarnate. यही तो मेहनत है यार एक्चुअल जो लोगोस ने करी है, क्योंकि Mm. जिसका फ्रेमवर्क ये है आर्केटिपिकल माइंड. Yeah, blueprint है वो. हाँ, ये जो सारे जो लेवल्स जो अवेलेबल है जो तुम बात कर रही हो, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आर्केटाइप्स. यही तो आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से हमें लेवल्स अवेलेबल हैं, और हम कैटलिस्ट को यूज करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एंड वी आर इवॉल्विंग अवर कॉन्शियसनेस कांस्टेंट बेसिस. एंड यही चीज है, अब हम यही समझ रहे हैं इस चीज के अंदर थ्रू कि एक्चुअल में क्या है ये, क्यों है ये, क्या क्यों डिजाइन कर रहा है, कैसे डिजाइन कर रहा है. तो एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है आर्किटेक्चरल माइंड स्टडी करने का, कि you are able to know the in first of all know the intention of the logos. ये लोगोस Mm. है, ये चाहता क्या था इसने जिस इस तरीके से डिजाइन करा है हमारा Hmm. यूनिवर्स को. System of seven. एंड हर चीज को सात से डिवाइड किया है. डायमेंशंस भी सात है जो इन्फिनिट बनते हैं बाद में. एनर्जी सेंटर्स आर सेवन, बॉडीज आर सेवन. हम्म. सिस्टम्स भी आर्किटेक्ट्स के सेवन हैं.
वही तो, न्यूमेरिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योग्राफिकल। हाँ बहुत, मतलब इसमें हर लेवल पे डेप्थ है, और देखा जाए ना तो इतनी डेप्थ इनिशियली सोची नहीं। मतलब ऑब्वियसली पूरा तो थॉट थ्रू करा कि इसकी प्रोजेक्शन इस लेवल पे जाएगी अनसर्टेनिटी तक, लेकिन ये इस लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे प्लानिंग नहीं करी थी कि हम दोनों को इस टाइमलाइन में मिलना होगा। It was not planned by the logos initially, but through the design and through, various key characters playing in this, हम दोनों के mind, body, spirit, complex totality and everything, they हम्म, kind of made this, thing, कि things happen in certain way. And राइट। हम्म तो ये एक प्लेग्राउंड जो बनाया है अपना, पूरा का पूरा, फ्रॉम द माइक्रोकॉस्म, की एक कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि क्या है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर अ ब्लैंक स्लेट, देयर इज दिस ब्लैंक स्लेट, एंड I want a universe in this blank slate, a functional universe. It is not a joke. If इट्स नॉट अ जोक। Yes, exactly, and it is a blank slate, and I want a functioning universe in this thing. Functioning universe का मतलब है, I just have energy, pure energy, and that energy can be transformed and transmuted into anything. But how would that energy would create a structure so that this one infinite oneness would be able to experience itself? So this is a preliminary thought process that the logos would have to go through to create our creation. या This is a very deep thing if I think about this. Like, how the freaking hell I would be creating a whole universe? वन आर्किटेक्ट टू अनदर। I am indeed, yeah. And I feel it quite interesting, because I like that thing. Architecture, and definitely the creation of this creation. And या जल्दी मैं सोच रहा हूँ, अपना प्रमोशन करवाऊँ लोगोस के लेवल पे। होगा होगा। ऑन इन। Seriously, seriously, I want to do that thing and, experience all of that. So here it is like whole energy, क्योंकि energy exists at all spectrums. Energy exists in microcosm and macrocosm, and this is just the structure we know of our physical reality, and there may not be a microcosm and macrocosm in other realities, alternate realities. We have, for example, a linear two-dimensional structure of reality, जैसे कि हम पेपर पे देखते हैं ना, कि एक doll and everything, like here is this person and they are walking. A reality would maybe like this also. एक reality जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल लेवल पे लोग जी रहे हैं, there would be such reality also. तो एंड देयर वुड बी रियलिटी जिसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर भी रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल 8 डायमेंशंस, एंड वो रियलिटी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी होगी, कि वो 8 डायमेंशनल रियलिटी इज way beyond our comprehension. And I believe that there would be some logos जिन्होंने वो 8 डायमेंशनल रियलिटी क्रिएट करी होगी, बिल्कुल। जिसके अंदर देयर आर बीइंग्स जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियलिटी को। और जहां तक कि मेरे को लगता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायमेंशंस होती है, इट रियली इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ, कॉम्प्लिकेशंस जो कि आ सकती हैं एक एक्सपीरियंस के अंदर। अब ये 3 डायमेंशंस के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि, लाइक पीपल आर किलिंग themselves, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वॉर चल रही है एंड एवरीथिंग, and there are infinite dynamics in three-dimensional reality also. And if we add another dimensions and we talk about that logos जिसने 8 dimensional reality बनाई होगी, that logos would be insane in themselves. उनका अलग ही डेवलपमेंट लेवल There है will वो। be logos who must have created 12 dimensions, 18 dimensions, वैसे भी हो सकता है। सीरियसली, सीरियसली, वो रियलिटी पता नहीं कैसी ही होगी। लाइक इफ आई इमेजिन माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को ऐसी रियलिटी में इमेजिन करूंगा कि लाइक एक कलाइडोस्कोप, अभी सीन है कलाइडोस्कोप, या and have you seen a Mandelbrot fractal? आई Huh? थिंक सो। So प्रैक्टिकल तो let देखा me show you है। Mandelbrot fractal. So a Mandelbrot fractal is, I was seeing it yesterday only, and it is a very good thing to like.
meditate also, like sometimes you can see it, right? Mm. So it is a matter of fractal, and I can imagine something like this, having to live in reality like this. Mm. Uh, like we can go from anywhere to anywhere, and how much we go, it is like moving on into this uncertainty. Like, what the hell is this? So this is the thing. So एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करा जाए तो here is a construct जो कि जिसके थ्रू एक इंटेलिजेंट इंफिनिटी, there is a construct through which intelligent energy creates a form for the consciousness of the oneness to sustain within it. And what is that thing? It is this 7 dimensions, It is the densities. matrix. Oh, okay. So Oh, it is the, microcosm पे हाँ matrix is the हाँ, matrix. so it is the construct through which intelligent energy, for example, एक blank slate से हम start करें creation of the universe. So we would need something जिसके अंदर that oneness है, जब वो उसको मैनीनेस में हम एक्सपीरियंस के लिए लाते हैं, एक इस premise से कि मतलब oneness need to experience itself. So it would need a construct for itself की भी है, जिससे वो अपने आप को it can separate itself from the oneness and can exist as the manyness and does not just dissolve itself within the oneness. The separation of the oneness within the construct of manyness so that it does not get dissolved back into oneness. और ये बहुत मुश्किल चीज है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना. कैन यू इमेजिन कितना सरदर्द लिया होगा लोगों ने डिजाइन बनाने के लिए, I know. क्योंकि But then जो एग्जिस्ट करता है लोगों देयर इज ओनली infinite to वननेस. think about. हाँ, Infinite time तो exist ही नहीं करता ना, तो infinity पड़ेगी है. अभी भी redefining refining तो चली रही है. तो टाइम बात नहीं है, बात है विल पावर लगती है क्रिएशन करने में. इट क्रिएट्स, इट टुक हाँ इट वो भी टेक्स विल है, विल पावर. पावर तो चाहिए. मेहनत की बात है यार. टाइम मेरे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है. अब मेरे पास इतना टाइम पड़ा, मैं फंकी हो जाऊंगा आधे टाइम में तो करते करते. इट But then टेक्स विल. with every third density planet, the logos is also learning, no? The refining. हाँ हाँ, वो भी है. लोगोस इज आल्सो रिफाइनिंग. एंड आई मेरे को अभी लोगोस की इंटेंशन में कैच नहीं कर पाता. इट इज लाइक लोगोस इज स्टिल फार फार बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन. एंड अभी हम जितनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जस्ट द लिमिटेड वे इन विच आई एम एक्सप्रेसिंग, जो कि मैं समझाऊं लोगोस को रिलेट करते हुए. एंड आई वांट Mm. लाइक जैसे कि if I am talking to you, I am getting to you, and I can understand that what you are understanding and I am understanding, like I have a connection with you. I Mm. want that, to have with logos. I sometimes, when I'm in meditation, I sometimes feel like I have connection with those beings of confederation and everything, and my higher Yeah. self and everything, and I can sense that, but I cannot sense that with logos at all. Imagine sensing that with a one infinite creator. वो तो कहाँ है Very पता नहीं. creator, so seriously, and it is the process by which we go. We gradually um, make up our consciousness to be able to connect or empathize with those higher beings. And as we connect or empathize, we ourselves expand in our consciousness. And this is how we reach out to that one infinite. Yeah. And अभी तो हमको सिर्फ logos ही पता है. And there would be some who had created the logos. Yeah, I was also thinking Yeah, the same thing. See, we have hierarchy तो. sun in the center of our solar system. Then हाँ sun is around the logos, which is center of our galaxy.
एंड देन हमारा लोगोस भी तो सेंटर ऑफ यूनिवर्स होगा ना, जहाँ पे वो मेन वाला लोगोस है जिसके हाँ अराउंड वही तो मैं एवरीबडी इज मेन लोगोस मूविंग की अराउंड बात से समथिंग। समझता हूँ। लाइक मोस्ट पीपल think the logos as the sun. I do not think the logos as the sun. I नो, think the logos as the center of the universe. yeah, no, as per Ra, sub logos is our sun, then logos is our sun which is in the center of the galaxy, our local galaxy. Hmm. फिर वो भी तो किसी के अराउंड घूम रहा होगा, जैसे सन उसके अराउंड घूम रहा है, तो वो So भी तो if, किसी if, के you- if you if you delve सेंटर ऑफ upon this यूनिवर्स concept, इज, पता नहीं वो तो कौन है, पता ही नहीं है। हाँ अब देखो इसमें क्या है ना, क्योंकि एक यूनिवर्स एक लोगोस ने बनाया फॉर एग्जांपल, तो हम्म। देयर आर डिफरेंट पैरेलल रियलिटीज जो कि अदर लोगोस भी काम कर रहे होंगे, एंड हम्म। दोज वुड हैव अ डिफरेंट लॉज ऑफ कंप्लीटली यूनिवर्सल लॉज होंगे इसके अंदर। So what the point I am asking you is, there is this galactic center, the logo that you are saying, हम्म। and for example, if we go to another galaxy, we have interdimensional, shuttle or anything, and if we हम्म। go to another galaxy, for example, Andromeda, हम्म। जो कि हमारे से सबसे पास में है, एंड हम्म। व्हाट डू यू थिंक कि उन लोगों के पास लाइक ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं होगी, या फिर वो लोग, बिल्कुल है, होगा। है ना, ऑब्वियसली हाँ। ना, तो हाँ। देखा जाए तो इनिशियल टेम्पलेट तो सेम है। या एग्जैक्टली। देखा जाए तो जो कि ग्रेविटी काम कर रही है, एस्ट्रोफिजिक्स जो काम कर रही है कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे, एंड इसके अंदर बहुत सारे स्टार सिस्टम्स हैं, उन स्टार सिस्टम्स के अंदर एक ग्रेविटेशनल नेट के अंदर बाकी सब प्लैनेट्स वगैरह सधे हुए हैं, जिसके थ्रू इट इज एबल टू सस्टेन लाइफ इन गोल्डीलॉक्स जोन्स, एंड हायर बीइंग्स आर एबल टू सस्टेन देमसेल्फ इन नॉन हैबिटेबल जोन्स। तो हम्म। ये एक एस्ट्रोफिजिक्स का जो एक मॉडल है, ये एक मॉडल का टेम्पलेट सेम है। हम्म। So, what do you think is the distinctive feature between the logos? For example, our Milky Way का logos हो गया, एक Andromeda का logos हो गया. What would be the distinctive features between those two logos? देखा जाए तो लाइफ फॉर्म का डिफरेंस होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से जेनेटिक ज्यादा लाइफ फॉर्म का डिफरेंस होगा, मे बी उसका जेनेटिक सिस्टम लेवल अलग पे। होगा। मतलब आर लोगोस जो है, ही अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ सेवन, और हमारे गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। हाँ, एंड्रोमेडा कुड बी लेंटिकुलर, इट कुड हैव अ डिफरेंट शेप। इट इज ये भी स्पाइरल हो एक्चुअली। सकता है, इट इज ऑल्सो स्पाइरल। ओके। या एस्ट्रोफिजिक्स तो वही काम कर रही है स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर। तो ओके। मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि जो डिस्टिंक्टिव फीचर होगा लोगोस के अंदर, क्योंकि लोगोस एक्चुअल में एज पर द जो लोगोस सेंटर ऑफ द गैलेक्सी वर्क कर रहा है, तो देयर वुड बी फॉर एग्जांपल इंटेंशन तो होगी लोगों की कि भी अलग मैप क्रिएट करना है, एंड आई हैव टोल्ड दैट कि हमारे लोगोस का ये आर्केटिपिकल माइंड के बेसिस पे, एंड वी ट्राई टू विजुअलाइज की एंड्रोमेडा गैलेक्सी का लोगोस का क्या टेम्पलेट होगा, एंड दे मे नॉट बी दिस आर्केटिपिकल माइंड ऑफ सेवन एनर्जी सेंटर्स, परहैप्स दे मे हैव सिक्स और दे मे मोर, हैव एट। या दे माइट हैव मोर। हाँ तो सिक्स भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, एंड विद इन दोज एट। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज मच मोर एडवांस्ड देन आवर गैलेक्सी, जितना मैंने सुना है। हम्म। तो ये हो सकता है देखो वहां पे कि एट एनर्जी सेंटर्स नहीं, एडवांस में सेवन और एट से कुछ लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। एडवांस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इट इज द आर्किटेक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क जो कि वी लोगोस चूज। सो उसके अंदर जो एट जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल ये एनर्जी सेंटर्स हैं या फिर जो सिस्टम ऑफ सेवन एंड एवरीथिंग है, ये एक्चुअल में है क्या? अगर इफ यू विजुअलाइज बैंड ऑफ कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, तो यही स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, जो कि हम एज ह्यूमंस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने हम्म। सेवन सेगमेंटेशन कर दी, ये सेवन का सेंटर बन गया, सेवन का हम्म। वो बन गया, सिस्टम बन गया। अब मैंने इसके अंदर हम्म। एट मैंने सेगमेंटेशन कर दी, वो एट का सिस्टम बन गया। अब उस एट के हम्म। अंदर डायनामिक्स अलग होगी, उस सेवन के अंदर डायनामिक्स अलग है, एंड दिस इज ये हाउ आई सब। थिंक वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द लोगोस विद इन दीज थिंग्स। यप। अब एंड मेरे को ना ये समझने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई कभी, लिटरली व्हाट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट सेंट्रल लोगोस दैट इवन क्रिएटेड दीज लोगोस गैलेक्टिक लेवल पे, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स क्रिएट कर रहा है, ग्रेविटी क्रिएट करी है जिसने जिसने एंड हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि यू आल्सो टॉक इन दैट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज। द फोर्सेस ना, या ये कुछ फोर्सेस, या फोर फोर फोर्सेस है इसके, मैंने लिखा था कहीं हाँ पे। एग्जैक्टली वो वाली चीज। तो वो जो एक बेसिक लॉज ऑफ यूनिवर्स है एंड एवरीथिंग, एंड यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है काइबेलियन में, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर,
law of attraction, law of correspondence, law of vibration and such. तो ये एक सिस्टम है, इट इज पॉसिबल क्योंकि वो एक इनिशियल फ्रेमवर्क विच इज अबव द फ्रेमवर्क ऑफ दिस एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे लोगोस, उससे जो अबव का जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू हो पाया वो चीज. एंड Right. दैट इज द थिंग आई आई बिलीव इज, जो कि मैं आर्केटिपिकल माइंड को कोरिलेट कर रहा हूँ मैं उस सेंस में. I am correlating Mm. that with that logos. I'm not correlating it with the logos of this uh, Milky Way or that. It may also have that, but I believe that this is क्योंकि क्या है कि if Andromeda का, for example, there is a being in Andromeda, it would also have this consciousness, and it would Yeah. also have this life and everything. And I believe like कि हमने like क्योंकि हम दोनों like we are kind of adapt in consciousness and seeking. We may have Mm. take a leap in understanding of these things which others may not be able to. And but this is how I am trying to understand the energy expenditure of the creation. If I have a blank slate and I am just whole unified consciousness, like I am pure oneness, and I want to experience myself. First of all, I would be making something. For example, मेरे पास अगर एक नदी बह रही है and I want to channel it, तो मैं कुछ I would make dam so that पानी I can channel that water according to how I can and how I want to. So Mm. these becomes the pool in which consciousness can exist, and I think these pools are what uh, we know as consciousness. Energy. And इस consciousness को exist करने के लिए, and if I take this circle and I make it flat out, and इसको exist करने के लिए it requires several structures to exist, and there is this another structure, and the first, this is the main consciousness that is separated from the one infinite creator. Mm. And then there is this mind structure of consciousness that allows for uh, sustenance of that structure or framework of consciousness. What do you understand by structure or framework of consciousness here? Structure or framework of consciousness. It's your mind. Yep. And what is the difference between that mind and that above consciousness that is the frame main consciousness? It's the separated form. The main consciousness is the finite form of the infinite. Hmm. Exactly. So it is the purest form of consciousness without any, जैसे कि हम रमन महर्षि के अंदर भी study करते हैं, like the true self, like I am Mm. not the sensation and everything. That is what is left. The finest form of consciousness is that main consciousness, which is Mm. separated from the one infinite creator. And उसकी Mm. sustenance के लिए, कि उसको exist करवाने के लिए, we have this mind that we experience as. And this mind we experience as is a framework of consciousness, a structure of consciousness, जो कि हमारी memories, experiences and everything, which is based on this physical reality. Physical reality means our hand, body and everything, and how we operate in this world, Mm. how we operate in this world, and how we operate in this world uh, creates ourself a mental construct of reality कि मैं अगर चल रहा हूँ, मेरे को बच के रहना है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा. I need to be interacting with the people and everything and socially and everything. So these things create a mental structure or framework, जैसे कि memories and everything. And ये जो structure है एक तरीके से लॉजिक इंटेलेक्ट का होता है. It creates a grounding for that main consciousness to be able to exist there. It is like this is the cup for the body. This is the cup for the mind. Physical is the cup for the mind. Mm. Vehicle. Yeah. जैसे कि ब्रेन के अंदर माइंड एग्जिस्ट करता है एक तरीके से देखा जाए तो, एंड दिस इज द कप फॉर द कॉन्शियसनेस सिमिलरली. Mm. एंड हियर इज द कॉन्शियसनेस.
So this is the Right. architecture, and this Mm. consciousness is just a speck, just a speck, and it is just a speck in the whole fabric of reality. Yep. If we enter that state, जो कि मतलब रमन महर्षि स्टडी सेशन के अंदर आता है, we just become closer to this root of reality. But we just experience that we can be close to the root of reality, but this is not exactly oneness. Exact oneness would be our consciousness expanding to this root of reality to the point it is not limited anymore. Mm. And that expansion will happen when from the physical level our brain has the compatible correlates that allows for the structure of consciousness to expand so that our mind is able to take the perception of a multi-dimensional nature and a kind of consciousness that allows for sixth density, perhaps seventh or eighth density consciousness. Without these structures, preliminary structures, we cannot experience that oneness, true oneness. Right. सो दिस इज द थिंग. तो ये आर्किटेक्चर का जो सिस्टम है मैट्रिक्स का, जिसके थ्रू वी एक्सपीरियंस अवर कॉन्शियसनेस, ये माइक्रोकॉस्म के अंदर मैट्रिक्स में आता है. दिस इज व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ मैट्रिक्स आई अंडरस्टूड बाय इट. Mm. Interesting. But इज द एक्सपैंडेड Ra, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स. yeah, Ra has always spoken about our logos. उन्होंने मतलब उससे आगे का कुछ कभी बताया नहीं है. In हम्म. fact, he said that our logos is a very powerful logos, and he created 250 billion star systems. मतलब 250 billion stars उसने बनाए हैं, हाँ. suns बनाए हैं. उनके अराउंड पता नहीं कितने planets हैं. हम्म. So it's a very powerful logo. I have felt, starting से ही बचपन से ही, let's wrap this up for now. Let's Okay. have final closing conversations. So Oh. मेरे को ना बचपन से ही I have that strong connection with the cosmos, like the whole nebulas and everything. And whenever जब छोटा था, these Mm. shows come up like into the wormhole with Morgan Freeman and जो भी Yeah. astrophysics के आते थे, I was like Mm. so lost in that. I was like absorbed in that too much. I had such a liking into that, everything, cosmic and everything. And I like understanding this. And I met a guy who was studying astrophysics, and I used to study his books of astrophysics too. And I like doing that. It was crazy. Yeah? I was feeling like I could do that all day and night. And those books were also amazing. So And why didn't you become an astrophysicist? no, yeah, astrophysics is kind of limiting to me. My being, I do not want to be specialized in something. A generalization is much more powerful, I believe. So it is the reason, I have not felt my roots. A lot of times, many people feel a strong connection to the planet, and I have not felt, strong connection to the planet. I have not even felt the strong connection to anything except the whole cosmic universe. I have felt myself a strong cosmic identity, like not only the planetary or like galactic identity, a cosmic Yeah, identity. I felt myself as. that is beautiful. You felt like you're part of an entire bigger family than what we perceive here. Yes, exactly. And I feel that too much. I feel like yes, if I'm walking and I'm like looking at the stars, like, and it's like a different experience for me. It's like I feel myself, and I often visualize myself as if I am doing anything, how what I am doing is causing waves to the entire cosmos. I'm not only thinking about planetary level and anything. I'm thinking like Mm. if I am doing anything, and if I'm like talking with you, and if I am being a catalyst to you, how this interaction energy transfer will impact the cosmos as the large scale, how this trajectory of planet will shift and everything. So Increasing the consciousness of the planet. yeah, and not exactly that, but identifying with the whole universal trajectory. Like it is the perception of consciousness that you can have.